So today we'll be talking about the mutual fund. You must have learned, you must have heard, you must have observed at so many places, in so many adverts, it is written mutual fund sahi hai. Of course, from the financial world perspective, from the perspective of investment, from the perspective of an investor, from the perspective of a novice, the person who does not have the knowledge about the market activities, from the perspective of the person who wants the better returns on his investments, mutual fund sahi hai. A very basic question arises. What do I mean by the mutual fund? Further to that, how do I invest in mutual fund? But before that, what are the various types of mutual funds available in the market? When mutual funds have to be in, or when the investment has to be done in the mutual fund, you do hear that line in the advert of every mutual fund that mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing. Like, your prospective investor must be having this line very clearly in his mind, that investment in you is subject to the life risks. Please read the offer document carefully before investing. Correct or not? Well, anyways, so let me present before you that what is this basic of mutual fund, how these mutual funds work, who are the people who carry on the activity of mutual fund. Of course, we'll not talk about more detailized things in the current lecture, in the current session, regarding who will control the mutual fund, how the protection is given to the investors. These all things will not be able to discuss in this session. Of course, I'll take one more session on that, and in that we'll cover it. Still, why people say that mutual fund sahi hai, if the advertisement itself says mutual fund investment is subject to market risk? Now, understand this point very carefully. Just observe this. मान लो किसी बंदे के पास 1 लाख भर रुपए पड़े हैं, ऑलराइट। इस व्यक्ति को ये 1 लाख रुपए किसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। क्यों एक ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना है? क्योंकि उसका पैसा इतना छोटा है कि वो उतना अमाउंट एक ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। अब वो जब उस एक ही बिजनेस में उस पैसे को लगाता है, तो वो बिजनेस जो है वो जितने रिटर्न्स इसको दे पाएगा उतना ही इसका बेनिफिट, उतना ही इसका लॉस। क्योंकि एक ही बिजनेस में अगर इन्वेस्ट किया तो उस बिजनेस में से प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। इसको अगर हम अल्टरनेट वे से सोचते हैं, मान लो किसी एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए है, उस व्यक्ति ने वो 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए, 2 लाख रुपए दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, 3 लाख रुपए तीसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, 2 लाख रुपए चौथे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दोज बिजनेसेस। There are n number of criteria which decide that how do you decide how the value or quantum of investment will be decided. और ये इन्वेस्ट करने के बाद पैसे ये बंदा ऑब्जर्व करता है कि कोई बिजनेस अच्छा रिटर्न दे रहा है, कोई बिजनेस मॉडरेट रिटर्न दे रहा है और कोई बिजनेस लॉस कर रहा है। बट ओवरऑल बेसिस पे इस व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से प्रॉफिट मिलते जा रहा है ऑन दैट 10 लाख रुपीस। सो व्हाट इज हैपनिंग? When a person is having reasonably large amount,
10 lakh rupees is reasonably very good amount. If a person is having reasonably large amount and he invests that chunk not into a single business but into the multiple business, he gets the benefit of getting the better returns. अब ये वाला जो बेनिफिट है, ये वाली जो सिचुएशन है, ये उस व्यक्ति को नहीं मिल सकती है जिसके पास 1 लाख रुपया है, और वो 10 लाख रुपए जिसके पास है वो मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर पा रहा है। चलो हम ऐसा अज्यूम करते, 1 लाख भी बड़ी रकम होगी। मेरे जैसा बंदा कोई गरीब इंसान है जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है, सपोज मेरे पास 10,000 रुपए पड़े हैं, सपोज, हाँ इतने भी नहीं है, वो बात अलग है, बट मान लो मेरे पास 10,000 रुपए पड़े हैं फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई वॉन्ट टू गेट द रिटर्न ऑन दैट। व्हाट आई कैन डू, I invest in someone's business, I get the return or loss. रिस्क है, पैसा डूब सकता है, पर एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, एक ग्रुप आता है मेरे पास, कहता है हम लोग ना लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनके पास छोटे छोटे अमाउंट्स है, इन सबसे छोटे छोटे अमाउंट्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, वो 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करके अगर इन्होंने 100 लोगों से इकट्ठा किए तो दे गेट 10 लाख रुपीज और नॉट, एंड देन such 10 lakh rupees is invested by them into the different businesses. तो जो बेनिफिट वो एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अलग अलग बिजनेसेस में से मिल रहा था, वही इन सारे 100 लोगों को मिलेगा इन द proportion of their investment. In this case, there is an organization which is mutually collecting the money from multiple people and investing according to their expertise, according to their knowledge, and is involved into the full-time business of that. That's what we technically call as a mutual fund. Now, understand the point. Now, mutual funds do not do the investment into these multiple businesses as such. Mutual fund does the investment in the share market. Now, look at it from the perspective of share market. Suppose, now in today's session, whomsoever is having whatsoever question, I would suggest you people to keep writing those questions on a piece of paper. Keep it aside. In the last 10 or 15 minutes of my session, I will be giving you the time of asking the questions. Till that point in time, I'm not going to take the question from anyone, neither in the chat box nor in the live basis. तो अब जरा शेयर मार्केट के एंगल से सोचते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए है, वो 10 लाख रुपए ले जाता है शेयर मार्केट में। वो शेयर मार्केट के बारे में कई बार कहा जाता है लोगों के द्वारा, अगर किसी को करोड़पति बनना है शेयर मार्केट में तो उसने क्या करना चाहिए? कहते हैं मार्केट में उसने 2 करोड़ रुपए लगाने चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का नुकसान होगा तो अपने आप वो करोड़पति हो जाएगा ना, और फिर भी अगर वो कंटिन्यू करेगा तो कुछ दिनों में करोड़पति हो जाएगा। You don't want to be in that situation. Forget about that. That was just a sarcastic remark, but this is the fact. There is another saying of the share market, that in the share market you will find two type of people coming daily. One, the people who have money, and two, the people who have experience. At the end of the day, the people who have experience go with money, and people who have money obviously go with experience, right? The point that I want to highlight here is, if I go randomly in the share market, I pick up some of the shares investments and I start doing the investment
based on some knowledge, some tips, some kind of information received from a broker or something like that. सर इस कंपनी में लगा लो, ये कंपनी बढ़ने वाली है, सर इस कंपनी में लगाओ, ये कंपनी को बहुत फायदा मिलने वाला है, वगैरह वगैरह. If I invest based on that, there's a dark chance of making the losses in that. Because whether the person who has given me the suggestion, what we technically call as a tip, नॉर्मली ये हम लोग सिर्फ वेटर्स को दिया करते थे, पर आजकल क्या है, लॉकडाउन चल रहा है तो हर कोई एक दूसरे को दिए जा रहा है. सो when I am investing, when I am putting in, when I'm betting on my money, just based on a tip, whether that person who's giving me that tip is having the reasonable knowledge or not, I've not checked it. Whether that person has done the proper research or not, I'm not knowing that. I don't have the time to do this all. That person has told me every time he makes the profits for me, so I'll invest it. वो 7 डील में आपको प्रॉफिट करवा के देगा, 8वें डील में इतना लॉस करवाएगा कि पिछले 7 का प्रॉफिट गायब और ऊपर से लॉस. That kind of thing should not happen for you. So what's the alternate for a novice? What's the alternate for the person who is having a small amount of investment? What is the alternate for the people who cannot track the market? Knowledge है, इंफॉर्मेशन है, मुझे पता है शेयर मार्केट कैसे काम करता है, मैं बहुत अच्छी तरह से कंपनी का एनालिसिस डिटेल में कर सकता हूं. आई एम हैविंग द अवेयरनेस अबाउट दैट, आई हैव लर्नड इट. आई नो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई नो द फाइनेंशियल एनालिसिस. स्टिल आई ट्राई टू बी very restrictive when it comes to the share market. I don't invest a lot. I trade actually, but I don't do a lot. There is a limit that I fixed for that, and the rest of my investments I do in the mutual funds. Why? Because I may be having the awareness, I may be having the knowledge, I may not be having all the information available in the market. जिस बेसिस पे किसी शेयर का प्राइस बढ़ या कम हो सकता है, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बंदा इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, जिस लेवल के रिसर्च की आवश्यकता है, उसके लिए मेरे पास समय नहीं है. और अगर मेरे पास समय नहीं है तो भी मैं कोई मुझे कह रहा है इस वजह से मैं वो इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो देयर इज ऑलवेज अ डार्क चांस ऑफ मेकिंग द लॉसेस. दैट्स व्हाई आई सेड दैट द पीपल विद मनी गो विद एक्सपीरियंस, एंड आई डोंट वांट टू हैव दैट एक्सपीरियंस. नाउ my dear friends, a question arises, then what is the alternate? And that alternate, one of the brightest alternate which is available in the current scenario, is the investments in mutual funds. अब ये होते क्या है? It is basically an organization which is floated by an organization called as AMC, that is Asset Management Company. Behind every mutual fund, you will always find a parent company of that, and that parent company floats, brings in the market, called as the Asset Management Company. They bring in the mutual funds. Now, what this mutual fund do? It's a separate entity, separate organization, a kind of department, I would say. Not a separate organization as such, but a kind of department which is having certain specific focus with them. So what they do, मेरे जैसे कई सारे बंदे हैं जिनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस होगा, पैसा है थोड़ा सा, पर समय नहीं है. कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है, समय भी है, पर नॉलेज नहीं है. और कुछ लोग हैं जिनके पास समय और एक्सपर्टीज है, बट बहुत सारा पैसा नहीं है. So these all category of people, what they can do, they can take the funds into the chunks. हर व्यक्ति से, अलग अलग व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं.
और ये जब बहुत सारे लोगों से ये थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं तो ये बहुत सारा पैसा हो जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया आपको कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल था, उन्होंने 100 लोगों से 10-10 हजार रुपए इकट्ठा किए थे, तो उनके पास 10 लाख रुपए हो गए थे या नहीं? उसी तरह से म्यूचुअल फंड ऑल्सो कलेक्ट्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मल्टीपल पीपल which makes a large asset under management. AUM is what we call as assets under management for a mutual fund. पहले मैंने कहा था asset management company, which is the parent company which runs a mutual fund. One asset management company can run n number of mutual funds based on the permission from Securities and Exchange Board of India, SEBI. के परमिशन के द्वारा ये लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड्स मार्केट में ला सकते हैं। You will be finding once this lockdown period is over, once the market comes on revival, you'll start finding there are so many advertisements being made for this mutual fund and that mutual fund. Now, what is the benefit of investing through mutual fund? One, I can invest in the small amount. Two, the mutual fund have got the employees with them who are going to do the research on the different companies' share prices, different companies' fundamental analysis, their performance on the actual basis, based on which they decide that which company can be invested in. Now, what happens here is it is their core business, it is their prime activity to carry out this investment activity only. इनको सिर्फ इतना ही काम होता है कि हमारी कंपनी के पास XYZ पैसा जमा है, ये पैसा हमको मार्केट में लगाना है, उस पैसे को हम मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे. That is what is done by those experts. Why I'm calling those as expert? Because they seriously have good knowledge about the analysis of share market. There are two analysis. I'll just primarily present those all. There are two basic analysis. One is called as the technical analysis and second is called as the fundamental analysis. What do you do in technical analysis? In the technical analysis, the person, the analyst, only keeps the track on the prices of the shares of the company. कि ये प्राइस मूवमेंट कैसे हो रहा है, किस वॉल्यूम पे प्राइस बढ़ रहा है, किस वॉल्यूम पे प्राइस कम हो रहा है, कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, शेयर ज्यादा खरीदे जा रहे हैं या ज्यादा बेचे जा रहे हैं. This all thing is what is done in the technical analysis. और उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इस शेयर की प्राइस का ट्रेंड किस तरफ चल रहा है. Whether the share price will go up, whether the share price will come down, whether the share price will remain stagnated, this is what is assessed in the technical analysis. ये purely सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेसिस पे जो प्राइसेस डिसाइड हुई है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है. इसका कंपनी के धंधे के साथ, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ कोई संबंध नहीं होता है. Whether this company is good or bad, this is not analyzed when it comes to the technical analysis. That thing is done, good, bad, worth investing or not, this all is done in the fundamental analysis. मैं ज्यादा डिटेल नहीं समझाऊंगा, कोई सवाल भी मत पूछना, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग शायद अगले किसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. I'll present to you a different session on how do we do the fundamental analysis or how do we do the technical analysis. So point is what? That when that mutual fund is having a core team of carrying out this activity of doing the research,
तो इसका मतलब they will be choosing the correct kind of company for the purpose of investment. And when they start choosing the correct kind of company for investing, of course, they will always be getting the correct kind of rates or profits into their investments or not. That's number two. Number three, they are having the large amounts to be invested in the share market. I'm not putting up any slides, any of the things. I'm just presenting to you what is the core data from the basic understanding point of view. I'm not trying to write anything today. I'm just trying to avoid it. Earlier, I was thinking that I'll prepare a PPT and I'll present it in the form of PPT. I didn't want to do that. Now, this particular investment, when the person has decided of investing into it, when the person is investing into it, into a large sum, that person will be able to choose the different categories of the companies, different nature of the companies. Like take for example, लॉकडाउन के पीरियड में किसी ने मुझसे पूछा था कि सर लॉकडाउन होने के बावजूद बिजनेसेस बंद है फिर भी कंपनी के शेयर प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? लॉकडाउन होने के बावजूद फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सेल नहीं कम हुए, इनफैक्ट उनके सेल तो बढ़े हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो कंपनीज हैं, जो आप ये चिप्स, पोटैटो वेफर्स, गोली बिस्किट ये सब खाते हो, इनकी कंपनीज तो चल ही रही थी ना। लॉकडाउन होने के बावजूद अमेज़न जैसी कंपनीज पे जो कंपनी सेल करती हैं उनके प्रोडक्ट तो बिक ही रहे थे ना। एंड देयरफॉर द प्राइस मूवमेंट्स वर देयर। हाँ, बैंकिंग इंडस्ट्री ठप पड़ गई थी क्योंकि जब बिजनेस में पैसे का सर्कुलेशन ही नहीं है, गवर्नमेंट आके कह रही है कि इंटरेस्ट माफ, ये माफ, वो माफ, माफ कुछ नहीं किया, इंटरेस्ट का मोरेटोरियम दे दिया। मतलब क्या किया? They gave the time to repay that interest after 3 months, after 5 months, something like that. That will get converted into a term loan and on that term loan you pay the interest again. इस वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री के रेवेन्यू कम हो गए, तो बैंकिंग इंडस्ट्री के शेयर प्राइसेस कम होने लगे। मोटर व्हीकल इंडस्ट्री जो थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ठप पड़ गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ठप पड़ गई, उनके प्राइसेस कम हो गए। अब अचानक से क्यों वो वापस से शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि द बिजनेसेस हैव स्टार्टेड रिवाइविंग, पीपल हैव स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द फोर व्हीलर्स। माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, टेक माय वर्ड्स, next 6 months there will be more demand of four wheelers, relatively more demand for four wheelers as compared to what we had in the last year. There will be the lesser demand for two wheelers, relatively lesser demand for two wheelers as compared to what we had in the last year. Why? What is the reason behind that? People want to feel more protective. People want to be more compressed or controlled. हम लोगों को एनवायरनमेंट से दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। मैं चाहे वो मारुति ऑल्टो में घूमेगा, मैं वो i10 लेके घूमेगा, बट आई वांट टू बी इन अ फोर व्हीलर। ये जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ना, इसे हम लोग एनालिसिस के तौर पे देखते हैं, और जब हम एनालिसिस के तौर पे देखेंगे तो बंदा सोचेगा यार मारुति सुजुकी जैसी कंपनी के शेयर प्राइस तो बढ़ने चाहिए, महिंद्रा जैसी कंपनी के शेयर तो बढ़ने चाहिए, आज नहीं 6 महीने बाद। हम जब इन्वेस्ट करते हैं ना एज एन इंडिविजुअल, वी आर द इम्पेशेंट पीपल, we don't have the patience in our life. I have taken a separate session on that. Still we don't have the patience. And जैसे हम लोग देखते हैं कि मैंने 100 रुपए पे किसी शेयर को खरीदा, just imagine this as a situation. I purchased a share at 100 rupees, वो 105 रुपए हो गया, मैं एक्साइट हो जाए, 5 रुपए 5% का रिटर्न। And when that share price goes to 90 rupees, oh my god, 10% का लॉस।
I start reacting to it. But the mutual funds, when they do the investment, they have got a research based investment. क्योंकि उनके पास खुद का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. And when they are investing with the help of public money, obviously you will be required to have more precaution in investing or not. And that's what those mutual funds do. They take huge care before investing. So when they have invested the public money, they will do this research and they will not be tempted or they will not be excited. They will not be trying to anxious because they are having the knowledge. उन्होंने अगर म्यूचुअल फंड जैसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, अगर सपोज किसी एक कंपनी के शेयर्स में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए या से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, XYZ whatsoever amount, we are not aware about that. Amount can be 10 crore, amount can be 10 lakh, amount can be 1 lakh, whatever that is. वो उनके हर म्यूचुअल फंड की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, उसके हिसाब से वो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. एंड दीज पॉलिसीज आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड विद इन देयर प्रोस्पेक्टस. वो एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसे हम म्यूचुअल फंड का प्रोस्पेक्टस कहते हैं. I'll show you so many of these documents, but at this point in time I only want to talk. So when they are investing, मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसी कंपनी ने, तो they will be having two things in their mind. One is a target that they want to achieve, and second is the stop loss, that where they will not be carrying the investment further. Now what is this target and stop loss? मैं अगर किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं ये सोच के रखता हूं कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मुझे इस कंपनी ने 10% का रिटर्न देना चाहिए या 20% का रिटर्न देना चाहिए. मेरा रिसर्च कहता है कि इस कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ने चाहिए बिकॉज ऑफ द डिमांड, सप्लाई, एटसेट्रा एटसेट्रा. फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जो भी नाम से आप कह लो. अब कल मुझे मेरे ब्रोकर ने कहा, सर HDFC बैंक इज वन ऑफ द बेटर इन्वेस्टमेंट इन द करंट सिनेरियो. Why? Because the banking industry will start reviving now, and within the private banking sector, HDFC has always been the most conservative bank and most strongest bank. And therefore, it is always expected that you should be investing in the strong companies. उसने कहा था, सर 1035 रुपए आज चल रहा है, इसका शेयर प्राइस अगले 2-3 दिन में लगभग 1100 रुपए पे जाना चाहिए. I'm already aware about some part of it, etc., etc. And I made some small investment into that HDFC Bank. I did the investment first at 1045 क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ गया. कुछ मैं एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, मैं थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट करता हूं. फिर दूसरे दिन पे उस शेयर का प्राइस आ गया 1020 रुपए. मैं I was not under a kind of pressure. HDFC बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग. The company which can grow to any level. And when that came to 1020, I again made some part of investment. I got the average price of somewhere around 1035. And yesterday it closed at 1057. I'm already having the profit of 22 rupees per share. And if it seriously goes up to 1100 rupees in the next 3 or 4 days, surely there will be the return to me or not. But the point that I want to highlight here is this kind of assessment, analysis, or taking the risk appetite without anxiousness is not available everywhere. And the same thing is what mutual fund does. अब mutual fund ने ये analysis किया, mutual fund को पता चला कि आज अगर मैं इस कंपनी में 1020 रुपए पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो ये 1100 रुपए पे जाएगा. Just imagine that situation, my dear friends. 1100 रुपए माइनस 1020, 80 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट डिवाइड बाय 1020% अगर मैं करूं तो 7.84% का रिटर्न इन अ पीरियड ऑफ 5 days. The company can have such kind of targets also or not? May not be having, but it may so have. तो ये ऐसे सारे एनालिसिस करते हुए ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें कहीं पे भी वो एंशियसनेस नहीं रखते, यार ये लॉस हो गया तो प्रॉफिट हो गया. इनके साथ साथ ये टारगेट बनाने के साथ साथ 1100 रुपए पे जैसे शेयर जाएगा, 1100 के नजदीक जब शेयर जाएगा हम लोग निकल जाएंगे, हम लोग बेच देंगे.
इसके साथ साथ they keep something called as stop loss. What is this stop loss? That if a company's share price start falling down, हमने तो बढ़ने की ही सोची थी, पर जरूरी नहीं कि हमेशा शेयर प्राइस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट सिनेरियो कभी भी किसी भी समय पे किसी भी चीज की वजह से चेंज हो सकता है। मान लो आज अनाउंसमेंट हो गई, आज अरविंद केजरीवाल साहब को बहुत जोर से खांसी आई, अचानक दिल्ली में सेंटिमेंट चेंज, मार्केट डाउन। मान लो कोई अगर सिचुएशन आ गई कि आज नरेंद्र मोदी साहब भाषण देने वाले हैं, खत्म, पूरा मार्केट ऊपर, मोदी साहब आ रहे, right? So this is how that market behaves. It is not only changing, or the market does not behave only on the basis of the actual fundamentals, but it also changes on the socio-economic environment. कि ओवरऑल क्या हो सकता है। शी जिनपिंग ने आज पूरी आंखें खोली, हो सकता है वो मोदी साहब ने तो शी जिनपिंग को फोन किया था, भाई इतना मत इतराओ, जितनी तू पूरी आंखें खोलता है उतनी आंखें खोल के तो मैं सोता हूं। और फिर भी वो बेचारा इतना चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा है वहां पे। यस ऑफ कोर्स, चाइना प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं, शी जिनपिंग। एनीवेज, द पॉइंट इज व्हाट, that these people already have a protection for the losses of, ये ऐसा नहीं है कि ये losses नहीं करते, बट लॉस को कंट्रोल करते हैं, प्रोटेक्शन रखते हैं, and that is what we call as the stop loss, that we will not do the loss beyond a particular point. All right, so on one side they keep the targets, on the other side they keep the stop loss, जिसकी वजह से क्या होता है, that they do make the profits in majority of the scenarios. क्योंकि जब शेयर के प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं तो इनका स्टॉप लॉस भी आगे आगे चलना चालू हो जाता है। मान लो अब HDFC 1057 हो गया, अब इनका टारगेट है कि 1100 रुपए पे चला जाना चाहिए, 1100 तक के जाता है, मैं 1100 रुपए में क्यों बेचूं, अगर उसका प्राइस और भी बढ़ने वाला होगा तो मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 1080 रुपए का। मतलब क्या, मेरे प्रॉफिट में भी मैं बहुत ज्यादा नुकसान नहीं चाहता। That is what is called as stop loss. So there are n number of policies, n number of systems that these mutual funds have, because of which they will always be able to give you the better returns. And that's why people say mutual fund sahi hai. Now the question arises, what are the variety of mutual fund investments available in the market, and how much amount I can invest in the mutual fund, and on what basis should I do the investment in the mutual fund? I'll give the answer to the first question today. The rest of the things I'll be answering in the next session that we'll be taking in a next lecture itself. The mutual funds primarily come in the form of equity diversified mutual fund. The mutual funds come in the form of debt oriented mutual funds, and the mutual funds come in the form of balanced format. Three categories of mutual fund that I talked about. इक्विटी, ये कोर एनालिसिस बता रहा हूं, इसके अलावा बहुत वैरायटी आती है, वो सारी वैरायटी अलग से डिस्कस करूंगा एट दिस पॉइंट इन टाइम। कोर डिवीजन ऑफ म्यूचुअल फंड इज व्हाट? नंबर 1, equity diversified, number 2, debt oriented mutual fund, and number 3, balanced mutual fund. What is an equity diversified mutual fund? When the mutual fund's core investment, major investment, is into the equity shares of the companies, of different listed companies, their 90% or more can be invested into the equity shares of different companies, then in that case those are called as equity diversified mutual fund.
Second one is debt oriented mutual fund. A debt oriented mutual fund is when their majority of the investment, that is 90% or more, are required to be invested into the debt fund, debt of the various companies, like in the form of debentures, in the form of government bonds, where their fluctuation in prices is very limited, the returns are moderate, in fact lesser, but there is a huge protection of funds. In the equity diversified, the protection of funds is limited, but there is always an opportunity of huge fluctuation in the prices, based on which you can get the growth from it. And the third category in that is the balanced fund. अब किसी व्यक्ति को ग्रोथ का भी बेनिफिट चाहिए और कुछ हद तक के प्रोटेक्शन चाहिए, एग्जैक्ट प्रोटेक्शन, एकदम फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं चाहिए, कुछ हद तक के प्रोटेक्शन भी चाहिए. That person should generally go for the balanced funds. मेरे जैसे जो लोग हैं जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, they should generally, they do generally go for the balanced funds. दाढ़ी सफेद हो गई मतलब बुढ़ापा आ गया, ऐसा नहीं होता है. आजकल तो खाने पीने पे भी डिपेंड करता है. But anyways, so these balanced funds have the benefit of both. They do the investment in equity, they do the investment in debt. On a combined basis, they get protection into their funds and they get the opportunity of growth. But from the equity diversified mutual funds, you get the highest level of returns. The expectation from the equity diversified mutual funds is the highest level of returns. From the debt mutual funds, you get the low rate of return, but protection of your funds. But in the balanced funds, you get the moderate returns and moderate protection of your funds. That's about the basic types of mutual funds. In which type should we invest? That depends on your risk appetite. At the young age, we generally suggest that one should go for the equity diversified mutual fund. At the mid age, one should be investing into the balanced funds. But if you are a senior person, you want more protection in your funds, then you should go for the debt funds. Where you want to maintain more liquidity into your funds, go for the debt funds. More liquidity मतलब क्या? Overnight आप invest करते हो, overnight निकाल लेते हो. There is always a kind of better return or the protection of your funds. नहीं तो equity mutual fund में क्या होता है कि आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो, कल उतना ही पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बड़ा डाउट है. Now, how do we decide the value of that equity mutual fund or debt mutual fund or the balanced mutual fund, or how do we decide the value of these funds? That also we have to discuss. That value is called as NAV, that is net assets value. मान लो म्यूचुअल फंड ने तय किया कि हम लोग ना 100 रुपए के यूनिट वाले म्यूचुअल फंड इश्यू करेंगे किसी भी बंदे को. जब एक न्यू म्यूचुअल फंड आता है, इट इज कॉल्ड एज NFO, न्यू फंड ऑफर. कोई भी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जब एक नया म्यूचुअल फंड मार्केट में लाती है तो दैट इज कॉल्ड एज NFO और न्यू फंड ऑफर. तो ये जब नया फंड मार्केट में आता है तो वो यूनिट की वैल्यू डिसाइड करते हैं. किसी भी व्यक्ति को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको मिनिमम 1 यूनिट या 5 यूनिट या 10 यूनिट, जो भी कंपनी डिसाइड करती है, जनरली दे डिसाइड 5000 रुपीस. तो 5000 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करने हैं. 100 रुपए के हिसाब से पर यूनिट का वैल्यू होता है, मतलब 50 यूनिट आप खरीद सकते हो मिनिमम. डिपेंड करता है जो भी फंड ऑफर आता है उसके हिसाब से, बट एक जनरल ट्रेंड है कि आपको 50 यूनिट खरीदने होते हैं. तो पहली दिन जब आपका इन्वेस्टमेंट हुआ तो आपके फंड का वैल्यू होता है, सॉरी, आपके फंड का पर यूनिट वैल्यू होता है 100 रुपए. दैट इज कॉल्ड एज NAV ऑफ योर फंड इज 100. अब म्यूचुअल फंड क्या करेगा? ये पैसा इन्वेस्ट करेगा. इन्वेस्ट करने के बाद में कुछ शेयर्स बढ़ेंगे, कुछ शेयर्स कम होंगे, कुछ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, कुछ कम होंगे, और उस टोटल असेट, सपोज इनके पास टोटल 5000 करोड़ रुपए आ गए थे, ये 5000 करोड़ रुपए इन्होंने अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट किए, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आज उन्होंने उन सब की असेट्स की वैल्यू कैलकुलेट की. मान लो ये 5000 करोड़ में से
2000 करोड़ रुपए एक्स कंपनी में इन्वेस्ट किए, 2000 करोड़ रुपए वाई कंपनी में इन्वेस्ट किए, 1000 करोड़ रुपए जेड कंपनी में इन्वेस्ट किए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ 3 कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब 5000 करोड़ डिवाइड बाय 100 मतलब 50 करोड़ यूनिट्स थे शुरुआत में, है ना। अब वो जो 5000 करोड़ इन्वेस्ट हुए, सपोज पहली कंपनी जिसमें 2000 करोड़ इन्वेस्ट हुए थे, उसकी आज की वैल्यू हो गई, उसने 5% का ग्रोथ दे दिया, +5%, मतलब उसकी वैल्यू हो गई 21 करोड़, 2100 करोड़। दूसरी कंपनी जिसमें 2000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, उसमें अगर सपोज उसने 2% रिटर्न दिया, तो उसकी वैल्यू हो गई 2040 करोड़। और तीसरी कंपनी 1000 करोड़ जिसमें इन्वेस्टमेंट किया था, उसने सपोज 2% का नुकसान दे दिया, तो -2%, तो 980 करोड़ उसकी वैल्यू हो गई। तो टोटल इस कंपनी के पास आज जो असेट्स अवेलेबल है ऑन द टोटलिटी बेसिस इज 5120 करोड़। अब ये 5120 करोड़ विल बी, अब इसमें से म्यूचुअल फंड अपना खर्च रिकवर करता है। दैट एक्सपेंस रेशियो इज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द सेबी। एक पर्टिकुलर रेशियो से ज्यादा ये इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। मान लो इस फंड का उन्होंने 1% निकाल लिया इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्सपेंसेस, क्योंकि इतने सारे लोग जब रिसर्च करेंगे, आपको जब सर्विसेज देनी होगी, आपको हर चीज सही समय पे इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो उसके लिए उनको ऑब्वियसली दे विल बी रिक्वायर्ड टू हैव सम काइंड ऑफ एक्सपेंसेस इन दैट। तो 1% उन्होंने एक्सपेंस का निकाल लिया। तो एक्सपेंस माइनस करने के बाद भी फंड की टोटल वैल्यू, टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट AUM इज 5068.8 करोड़। अब ये कितने कितने यूनिट्स थे? 50 करोड़। सो डिवाइड बाय 50, तो आपके फंड की आज की वैल्यू हो गई 101 रुपया 376 पैसे, 101 रुपी 376 पैसे। मतलब जो यूनिट में आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, उस यूनिट की आज की वैल्यू 101 रुपए 376 पैसे हो गए, 101.376। If you will sell that mutual fund today, you will be getting at the rate of 101.376. That is what we call as NAV or net asset value. कैसे कैलकुलेट हुआ नेट एसेट वैल्यू? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल देयर इन्वेस्टमेंट्स minus their expense ratio, that is the total net assets under management. Total net assets under management divide by total number of units is what we call as the net asset value. अगर आपको आज की तारीख में उस कंपनी, उस म्यूचुअल फंड में, सॉरी नॉट कंपनी बट उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एट दैट नेट एसेट वैल्यू। अगर आपने NFO के समय इन्वेस्ट किया, तो आप फ्रेश वैल्यू मतलब 100 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे। पर जो फंड ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, उसमें अगर आपको पैसा इंफ्यूज करना है, उसमें अगर आपको और पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपको करंट NAV के हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है। So this is about the complete absolute basics of mutual fund. Still we have to talk a lot on that, but that will be doing in the next session. I'll give you 3 minutes now for asking the questions. Anyone who has the question can come live and ask the question. I won't accept any kind of question which will be coming through the chat box. Yeah, Jay, you can go ahead. म्यूचुअल फंड कंपनी के भी शेयर्स होते हैं क्या? म्यूचुअल फंड कंपनीज के नहीं होते। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाली जो कंपनी होती है, दैट इज असेट मैनेजमेंट कंपनी, हाँ, उनके शेयर्स हो सकते हैं। लाइक HDFC AMC इज हैविंग इट्स शेयर्स लिस्टेड इन द शेयर मार्केट। ओके। और सर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन सब चीजों के बारे में बात करना बाकी है, बिकॉज हाउ डू यू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड, दैट वी हैव नॉट येट टॉक्ड अबाउट, विल डिस्कस इट। ओके सर। या मृदुला, यू कैन गो अहेड। Hello, sir. Yeah, go ahead. Sir, the returns which we get on mutual funds, are they taxable? Okay. The returns that we get on mutual fund, are these taxable, is dependent on multiple factors. Like what kind of mutual fund it is. Number 2, what kind of time period for which you are holding that mutual fund. And there are the different tax provisions for the different categories of funds and the different period of holding. And based on that only you decide that how much tax you are supposed to pay, or whether you are supposed to pay the tax or not. So that I cannot discuss right away. There are the different factors. We'll discuss it in the session to come.
Okay. Yeah. Okay. So I think that today's session was fruitful for you all. We'll be meeting in the next session on Monday.